Hello, friends. Good morning, good afternoon. Happy Friday. Your favorite player? Sir, मेरा favorite player जो है वो विराट कोहली है. Hello, Mahesh ji. Hello, Kamal. Hi, Manas. Hi, Vatsal. Hello, Yes, good Jess. afternoon. Hello, everyone. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good afternoon, Rohan ji. Good afternoon, Anita ji. Deepshika. Good afternoon, Nilima. Good afternoon. Hi, Anu. Hi, Radha. Hi, Gaurav. And Miloni. My new friend Miloni is here for the first time. Welcome. Good afternoon. Okay, we're going to start with our movement. So we'll be dancing along to two songs. It's time to get refreshed. This is the last time we are having movement this whole week. इसके बाद 2 दिन के लिए कुछ movement नहीं होगा. So try to make the most of it. Okay, we have a very action-packed weekend, but regular sessions won't be there for 2 days. Let's make the most of these next 8-10 minutes. ये तस्वीर है ख्वाबों के रंगों की, खुशियों की, सपनों की, अपनों की. ये तस्वीर है जादू के लम्हों की, मेरे दिल के सभी कतरों की. मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल. मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल. जरा सी यहाँ तकरार है, मगर प्यार बिखरा पड़ा. मुसीबत अगर कोई आ पड़ी, हर दिल मिलके खड़ा. हो तस्वीर है आंसुओं से रंगी, देख कर आंख है छलकी सी. हो तस्वीर है खून के रिश्तों की, जो मेरी सांसों में है बसी. किसी कागज की पुड़िया में इन्हें रख लूं मैं डिबिया में, ये सारे टू 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 ब्यूटीफुल. बसा लूं इनको अखियां में, रख लूं फिर पलकियां में, यहाँ हर गुल 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 ब्यूटीफुल. मेरे दिल की ये बगिया है जो इस गुलशन की कलियां है, यहाँ हर फूल 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 ब्यूटीफुल. मेरे दिन है और रतिया है सुकून वाली ये निंदिया है, यहाँ हर पल 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 ब्यूटीफुल. Yay, thank you, Kamal, for dancing along. This is a new song that I had discovered through the Sattvic movement. काफी happy, uplifting song है. सुन के हमेशा अच्छा feel होता है. I hope you felt good after listening to it. I know many of you are attending in the middle of work, कुछ खाना खाने के बाद, कुछ काम पे हो, कुछ स्कूल में हो, but try to make the most of it. If possible, turn on your cameras. There's no judgment. It's all about being together and sharing a moment together.
for whoever is new, I think many of you must be new with us. So welcome to 5 AM movement. We are a community that wake up together, grow together in mind, body, spirit. We have different activities every day, but it's all geared towards movement, mastery, meditation. We do all of these aspects. And weekend ko hamare special hote hai. Again, we have a very special weekend for you. We are all planning it in the background, and all of this is done by our team of volunteers. We don't take any money for it, at least at this point. हम कुछ workshop करते हैं जिसको paid बनाते हैं, but for the most part it is completely free. So at least make the most of it, right? We are doing all of this to provide the best service possible. So try to make the best use of it as possible. Okay, so last song of the day. Good afternoon and welcome to the new people who have come. Manjushri, Divya. Good afternoon, Prajakta, Niharika, Anita. Welcome everyone. Okay, last song of the week. As you know, EST session में एक हमेशा special song होता है, different song. Usually थोड़ा सा old होता है. So let's enjoy together, everyone. If possible, just turn on your camera. Even if you're at your desk, just move along aise. All right? Okay, let's have fun. Accepting me with a line. They can't believe a girl as cute as me is sick with the rhyme. But don't ask nobody for nothing. I'm an independent diva with a style that you love me, so check it out. Come on, come on. Nice to see you, Harshada. Great. यार मैं Hi, तो good morning. Hi Sonal, good morning, good afternoon. मैं तो डांस करके बहुत चार्ज अप हूँ.
I'm a bit disappointed with you guys that very few people joined along, but trust me, even अगर आप 5 to 10 minutes movement करो, intense movement करो, dance करो, smile करो, it can make your whole morning or whole afternoon. So the benefit is there for you. Again, I would say that we are doing this all for you, so try to make the most of it. And if nothing else, then just move along. जहाँ पे भी आप हो, camera बंद भी है, no problem. Make the most of it because it's going to help you refresh. Okay, so let's do our selfie and then we will move on to our mental health discussion of the day. Okay, so what pose do we have for the selfie? अच्छा, वैसे हवा हवाई सॉन्ग किसी ने सुना है रिसेंटली? हाँ, हमने सबने सुना तो होगा, बट ऐसे कुछ गाने होते हैं which really, bring back old memories. Maybe. Yeah. So, is there any pose like from the song? हवा हवाई से related? Okay, yeah, Harshada show. हाँ, perfect. So, guys, whoever is new, हम रोज EST session में, no, EST and IST session में 5 AM movement में we do a selfie, okay? So we just need to turn on your cameras for 5 seconds and we will pose together. Yeah, so show us the pose, Harshada. Okay, this is the Hawa Hawai pose. Okay, jaldi se turn on your cameras, don't be shy. Hi Niharika, hi Sudhakas. All right, I'm starting the timer now. 5-second timer. Last chance. Hi Divya. Timer is starting now. 5, 4, 3. Okay. Just hold your position. We have Vaishnavi also. Nice to see you, Vaishnavi. 3, 2, 1. Beautiful. Thank you all. So we are going to have our last beautiful discussion of this week. This week we have had some very, very nice discussions. We discussed about 7-8-9 rule. We discussed about pragmatic thinking. Tuesday को हमने क्या discuss किया था, Kamal? Thursday we discussed about recipes. Tuesday को भी बहुत अच्छी discussion हुई थी हमारी. So we've had some very nice discussions. Intention. Yeah. Intention. Yes. Well said, Sonal. Well reminded. So Friday को Instagram पे हमारी post जाती है mental health पे. So the last Friday, the post was around work-life balance. Okay, so this week we need to create our own post. Okay, so as you know, these sessions हम live stream करते हैं, तो we have an opportunity to create our own content, to inspire our social media team. So next week शायद हमारे discussion के basis पे उन लोग कुछ post करेंगे. But anyway, we need to discuss about mental health, which is very important and which definitely I feel we should discuss once a week, So just want to welcome a few more people. Welcome Varnika, welcome Siana, welcome Nilima. Nice to see you all. Again, I want to give you a quick reminder. Weekend K sessions are just about to begin. So at this time tomorrow, there will be an art session. We have a very beautiful facilitator, Swarali, and we have Tanvi, who is our very own amazing host. They are going to come together and lead an art session for you. It will be a 1-hour session. So bring whatever materials are required. Aapko list diya jayega group mein. And day after tomorrow, Sunday at this time, we'll be having Swar Sangam, which is our singing event. And one is going to be an open singing. आप कुछ भी dedicate कर सकते हो, जो भी song आप dedicate करना चाहते हो. And another one will be like Antakshari.
Okay, it will be a lot of fun. Sunday is our Sunday fun day. So do join that. And Saturday, Sunday, IST also, we have yoga and we have home workout. Okay. So I was thinking mental health related, we could talk about workplace mental health. Okay. But it's open for anyone, whoever would like to speak about something जो आपके हिसाब से जो आपको लगता है contributes to better mental health. Okay, it can be at a personal level, it can be at a relationship level, or it can be at a work level. Okay, so anything which you have felt has been. I feel that we should stay away from negative people because the content we consume, so that affects our, mental state. Not stay away, but I don't prefer, that gossiping vagera. So I don't like that. That's Sonal, negative. here, may I ask you one thing? When you said stay away from the negative people, what does that exactly mean? Like, what is negative people? Who are negative people? Not negative people. Well, you know what? How do I say? सबका अपना perspective होता है, but negative as in I don't like, when someone talks to me कि अच्छा मतलब कि वो ऐसा है वो वैसा है, and that वो चीजें I don't like consuming, मतलब मुझे उसमें interest नहीं है. It's not about negative people or positive people. It's about me. I don't like talking about negative traits of people. Okay. I have a different theory about it. Sorry. Okay, so sorry, just before we begin, I'm very glad, very happy that we all have some things to share. Okay, but we just need to keep in mind, we need to keep this discussion positive. Okay, at the same time, agar kuch difficult emotions hai which may rise up, it's totally okay, but we need to be supportive to each other. That's the most important. Positive matlab we need to be positive towards each other, है ना? एक दूसरे को नीचा नहीं गिराना है और ऐसा नहीं कि like I disagree with you, this is wrong, it's okay to disagree, but we need to do it in a constructive way, and it's a safe space. So अगर हम कुछ share करना चाहते हैं अपनी बातें, we are totally welcome to share, and it is the responsibility of the rest of us to hold it with a lot of love. Okay, and please keep sharing comments on the chat, whatever you feel, जो भी आपको लगता है किसी का सुन के, किसी को अगर आप encourage करना चाहोगे. So thank you Varnika for asking the question, and thank you Sonal for starting the discussion. We will continue on this topic as well. Sandhya, you were saying something. Yeah, I was saying I have a different theory about it. मतलब आप different negative people से दूर नहीं रह सकते हो, but आप decide कर सकते हो. मेरा theory ये है कि somehow ऐसा होता है कि आपको जो चीजें नहीं पसंद होती है आपके discussion में वो आती है, obviously आती है, आप उसको नहीं रोक सकते हो. But if you don't want to hear, मतलब जहाँ रहते हो वहाँ पे भी आप available ना रहो, मतलब सुनना but ध्यान नहीं देना. Let them talk. Okay, sunna but dhyan nahi dena, let them talk. Okay, so are you saying that you should leave from the physical space that you're in, or you should just disconnect mentally when you feel that वो topic? Just disconnect your mentality from the talks. मतलब आप उन बातों पे ध्यान ना दें, क्योंकि आप हर टाइम पे जगह प्लेस नहीं चेंज कर सकते हो. Sometimes you have to able with the peoples. आपको वहाँ रहना पड़ता है, बट आप वहाँ रह के भी अपने स्टेट ऑफ माइंड से वो चीज पे अवेलेबल ना रहें, तो दैट इज गुड फॉर मी. क्योंकि समटाइम आपके फैमिली में भी ऐसी चीजें होती रहती है दैट जो आप सुनना नहीं चाहते हैं, बट आप वहाँ पे मेंटली अवेलेबल नहीं रहते हैं, तो ये अच्छा है, आपके ऊपर इफेक्ट नहीं पड़ेगा नेगेटिव थिंग्स का. Maybe are you trying to say like selective listening? जो काम का है वो रख लो और जो नहीं है तो उसको इग्नोर कर दो. हाँ, बोल सकते हैं इन शॉर्ट. Yeah. Very nice. Thank you, Sandhya, for adding to Sonal's point. True. So can somebody give an example of
डे टू डे में आपको किस टाइप की डिस्कशन हो सकती है जो नेगेटिव हो या जो टॉक्सिक हो, जो हम इग्नोर करने सीख सकते हैं? some type of family issues जो सबके लाइफ्स में होते हैं, and other sometimes people मतलब लोग आपको just a डस्टबिन यूज करते हैं, don't take this otherwise, but sometimes चीजें आपसे रिलेटेड नहीं होती है, बट लोग आपको ऐसे ही कि हाँ अपना आओ और सब डालो, तो उन थिंग्स के लिए आई थिंक आप उनको इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि वो आपसे रिलेटेड नहीं है, बट आप सुनते हो तो आप पे अफेक्ट करेगी, सो उन पे ध्यान सुनो ही मत. लाइक जब मेरी मेड आएगी तो यू नो शी विल कीप बैबलिंग कि मेरी मदर इन लॉ ऐसी है, एंड आई से यार क्या बोल रहे हो आप, लीव इट. Why talking about it to me? Right. So I'm going to read some comments from the chat, because you can participate either by talking or you can participate on the chat also. Okay. If you want to unmute, that will be very nice. We'll all be able to hear you. But if not, you can write on the chat. Niharika ने पूछा था पहले, what if your family has such negative people? So I think यहाँ पे people are not negative. There are certain things, certain topics or certain way of talking which can have a negative impact, है ना? So Niharika also says negative people are ones who don't encourage or support you and just keep judging you. Very well said, Niharika. Very important point. Sonal, वो I think Sandhya was sharing कि Yeah, करना exactly. चाहिए. तभी Sonal said true that. Niharika says totally agreeing with Sandhya ji. Harshada is saying negative like toxic people, criticism, comparison, etc. Yes, very nice. Niharika says things are affecting me a lot. Thankful for this community. I can be at peace. Wonderful, Niharika. So happy to hear. So I have few things. I have been in this group for a while, but I have not able to join for many times. So mental health, as the topic is mental health, I just want to mention my experience here. It is mental health will get disturbed not only by the negative people. I agree, is one major factor. There are many other things like illness of the family members, or the problems, the financial problems that we face, many other issues that we face in our life. So, and even with these situations also, we should ensure that our mental health will be stable, and we should not lose our emotions in the situations. We should not show our frustrations or anger on the kids. And also our work stress should not be shown on the family and the same way. So all these things come under mental health as well. uh, what I practiced for the past few days is like I was totally disturbed by with the 13 like some of the comparisons with some like in my joint family, and also some illness of my brother also. So with all these things, what I did, what I felt that we should create, I started creating an aura or a circle around me, and I try to be happy within that circle, irrespective of whatever happens outside that. At least 2 hours a day, I should not get all these things, and I should be very peaceful, and I should at least be in the thoughts which I like, either in the having God in the heart, or praying Him, or with a passion that I want, by doing the things which I wanted to do, well, a hobby or work or whatever it is, office work or whatever it is. At least 2 hours, I should not remember anything. I should not consider anything. So if you keep practicing, at least you will come to reach the point. At least most of the time, the daytime, as long as you are awake, you will be you will be reacting to those situations, but uh, uh, it should not disturb your mental health. Hope you are getting my point. um, uh, we should focus on what has to be done, but it should not be taken completely, and it should not disturb our well-being, basically.
Wonderful, Sudhakar ji. Thank you so much. You shared many different aspects in a very short time. And already ऐसा समझ में आ रहा है मुझे कि many people have many things to talk around mental health. And I'm so glad that we took up this topic. हर हफ्ते सोशल मीडिया हमको पोस्ट देती है और हमको उससे रिलेटेड हम बात करते हैं, even if it is mental health. But today we are opening up and see how many people have how many things to share. So I'm just going to read out some things from the chat. Shout out to Sienna James. What an amazing display image. Oh, okay. Let me read out. Happiness is the new rich. Inner peace is the new success. Health is the new wealth. Kindness is the new cool. Yes, Sienna, thank you for bringing your DP to our discussion. Niharika says, also practicing mirror talk. It instantly changes my mood. So it goes, I think it's on the same lines as what Sudhakar ji said, creating a circle for 2 hours a day. Very nice. I would like to hear more about the circle. Okay, we will we'll come back to you on that. Harshada I'm says, Sudha, basically. I'm Sudha. Sudha okay, Kasturi. Sudha. Okay, Sudha. okay. You can call me Sudha. All right. Harshada says we can try to be away from toxic people as much as we can. And even if we are physically close with them, we should be detached and try to maintain our mental boundaries by using affirmations or by replacing with something positive. Be with positive people as much as you can. Thank you so much for sharing, Harshada. Please put hearts and thumbs ups and all on the chat. You will make them feel supported. Some people have shared their support for Sudhaji. Niharika said, well said. Divya said, wonderful. Vaishnavi said, some career job has affected our mental health. We only keep thinking about the problem, not the solution. Actually, Vaishnavi ji, yesterday we had a discussion about solution-oriented thinking. Wednesday ko we had a discussion around that. So you can check out the video for that. Maybe you will get some interesting insights. But yes, absolutely. Sudhaji also says overthinking also affects our mental health. It's very important to be watchful of our thoughts. Okay. So देखो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. I think हमने पहली बार ऐसा open space दिया है बात करने को. तो we all have a lot to talk about. So we may not end up having one particular theme of today's discussion, which is totally okay. What I'm going to do is I'm going to shut up and I'm going to give you the space. आपको जो शेयर करना है जिस टॉपिक पे, वर्क प्लेस है, फैमिली है, पर्सनल है, हेल्थ है, anything related to mental health, you can talk. Okay, so I will give you the space now. Hi Ojas, I am Rohan Kothariya. I want to share about mental health. मैं बाय प्रोफेशन चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो मैं बहुत सारे जो एक्सपीरियंसेस किए हैं, तो एक मुझे समझ में आया कि एक्सेप्टेंस एंड एक्सपेक्टेशंस अगर क्लियर हो तो वी कैन कीप आवर मेंटल हेल्थ एट अ नॉर्मल लेवल. अगर आप चीज़ों को एक्सपेक्टेशंस अगर आप सामने से रखते हो किसी से भी, और अगर आप उसे बताते हो कि आप उससे क्या एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, और अगर कोई सिचुएशन है जो डील नहीं हो पा रही है, तो आपको वो एक्सेप्ट करना भी जरूरी है एज इट इज. वो ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो सोचना है, ये अननेसेसरी हमारे मेंटल हेल्थ को किल कर रहा है. बिकॉज मैं प्रैक्टिकली ये देख रहा हूँ कि हम टॉक्सिक पीपल से भाग नहीं सकते. ऑफिस पॉलिटिक्स एंड everything is there only. We cannot hide ourselves from anyone because we are a socialized people, nor we are a monks. तो और एक चीज हम कर सकते हैं फॉर बेटर मेंटल हेल्थ, अगर कोई भी हमारे पास आता है किसी भी डिस्कशन के लिए, अगर हम उस डिस्कशन को पर्टिकुलर पॉइंट पे ही रख दें. मोस्ट ऑफ द फैमिलीज केसेस में टॉपिक रहता है पर्टिकुलर पॉइंट के लिए और डिस्कशंस पास्ट के निकलते हैं विच अफेक्ट्स द मेंटल हेल्थ. तो ये जो छोटे छोटे प्रैक्टिकल इश्यूज है, अगर हम उस तरह से डिस्कशंस में लाए, तो आई थिंक वी कैन कीप आवर मेंटल हेल्थ स्टेबल एंड गुड. बिकॉज इट इज
ऑलवेज इन आवर हैंड कि हम अपने मेंटल हेल्थ को कैसे रखें। जैसे हम फिजिकल हेल्थ में क्या खाना है हम डिसाइड करते हैं, सामने वाला डिसाइड कभी नहीं करता। तो हमारे मेंटल हेल्थ सामने वाला क्यों डिसाइड करे, वो हमें ही डिसाइड करनी चाहिए कि वो कैसी रहनी चाहिए। तो दिस इज व्हाट आई फील। Agree with all the points. थैंक यू। कंटिन्यू, और जो भी बोलना चाहता है, आई विल स्पीक लेस, आई विल गिव अ चांस टू यू टू स्पीक। इफ यू वांट टू रिप्लाई टू समबडी, I would like to add something. So I think like instead of calling them toxic people, negative people, like a little more understanding towards these people. Maybe they will be in our families and in our workplace. कहीं पर भी जाए ऐसे लोग हमें मिलेंगे जरूर, वो तो पक्का है। And उन लोग ऐसे behave करते हैं, they behave this way because they have also probably faced something in their life, some difficulties, some big major issue of which they could not cope with, because of which they have become this way. No, nobody is born negative or nobody is born toxic. So I think a little more understanding towards these people, or understanding their background, which we may or may not know, will help us be more understanding towards them rather than a bit of judgmental attitude. Yeah, that's it. Actually sometimes चीजें हमसे रिलेटेड भी नहीं होती है, बट हमें वो सुनना पड़ता है। सो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं कि हम अभी, जैसा मैंने पहले बोला, स्टॉप बीइंग अ डस्टबिन फॉर समवन। वर्ड्स में भी थोड़े हार्श हो सकते हैं, बट दैट्स ट्रू। So I will only fill the silence. किसी को भी बोलना है तो you can speak, but जब भी silence होता है, I will just read out the messages from the chat. So overthinking, Sudha ji says, overthinking also affects our mental health. Important to be watchful of our thoughts. Many agreements, many hearts, many likes. Very nice to see. Sonal says animals play a positive role when it comes to mental state. Very well said. बहुत सारे topics निकल रहे हैं यहाँ पे. I really liked what where did she go? क्या था उनका नाम जिन्होंने अभी शेयर किया था about I'm forgetting. संध्या, आपने जो कहा था it may not be related to us, उसके पहले somebody, I think Siana, no, it was you who said that we need to think about the other person's perspective. Compassion जब आ जाता है तो then we are not judging the person who has judged us, we are trying to see them that they also might be struggling, they also may not know what they are saying, है ना? And then Sandhya said that it may not be about you at all, है ना? तो अगर हमारा perspective shift हो जाए, if we are not looking at, you know, if we are not becoming defensive, अगर हम, थोड़ा मुश्किल होता है in the moment, you know, because we are feeling attacked. ये जो नेगेटिविटी है, हमको लगता है कि हमें उससे अफेक्ट हो जाएगा, हम खो जाएंगे अपने आप को. So very well said, Siana and Sandhya. Niharika says true, but what if we are the only ones on the understanding side? Maybe somebody can answer that. Kamal says people are not negative, situation makes them feel like that. Okay. Yes, Harshada. Yeah, I think affirmations also takes a very important role in this. Like with affirmations, we will feel a little strong, and once we are strong, then only we will not take things so personally. Like if we are weak, then we take everything personally. Like if anybody's, even if somebody is saying something just like that, but we will think like, no, he's talked about me. Indirectly, he was talking about me. So like that, if we are mentally weak, that time we try to make up more stories. We try to be over. We do overthinking. Like many people said, like overthinking might be the cause. So if we do something like affirmations or meditation, or we have some positive people around, then that really helps.
एक्चुअली आई वांट टू ऐड समथिंग। जैसे आप बोल रहे हैं मेंटली वीक कोई नहीं होता है, ये हम सोच के रखते हैं, इसलिए हमारा दिमाग में ऐसा चलता है कि हम मेंटली वीक हैं। ऐसा बनाया नहीं है भगवान ने, सबको बराबर बना के भेजा है। हम अपना खुद ही कॉन्सेप्ट सेट करते हैं कि हाँ हम मेंटली वीक है, हमें बुरा लग रहा है लाइक, तो ये कॉन्सेप्ट चेंज करने से आधा प्रॉब्लम तो वैसे ही चला जाएगा। एंड पर्सनली मैं जब कुछ भी ऐसे ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ, आई लाइक टू वॉच कार्टून्स बिकॉज उनमें कोई साइंस नहीं होता है। मे बी थोड़ी हो सकता है थोड़ा फनी हो, बट लिटरली आई स्टार्टेड वॉचिंग कार्टून्स, क्योंकि उसका कोई स्टोरी नहीं होता, उसमें कोई रिलेशंस नहीं होते, उसमें कोई एंजाइटी जैसे कुछ नहीं होता। बट ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि हम मेंटली वीक है। Agreed, ma'am. Amazing. I just want to acknowledge. Even Harshada ma'am, every time आप affirmations भी नहीं यूज कर सकते। कभी कभी आप ऐसे सिचुएशंस में होते हो कि आपको रिएक्ट वहां पे करना पड़ता है या रिस्पॉन्ड करना पड़ता है। प्रॉब्लम है कि हम लोग रिएक्शंस पे आ जाते हैं, नॉट रिस्पॉन्स, और हम सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बात नहीं करते। मतलब मैंने हमेशा देखा है कि जब डिस्कशंस की बात आती है तो टॉपिक रहता है बाजू में और बाकी के चीजों पे ही डिस्कशंस हो जाता है। तो अगर हम वो एक एटीट्यूड रखें कि वी शुड रिस्पॉन्ड इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग, और सामने वाले को वहां पे लेके आए कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है तो उस पर बात कर, तो आई थिंक जो टॉक्सिक पीपल्स है उनका टॉक्सिकेशन बाहर कम आता है वहां। तो Yeah, ये true. And थोड़ा सा emotionally, हैबिचुअल है, अगर वो कर पाए तो। true. And emotionally भी detached रहना चाहिए, तो that time sometimes we मैम एक्चुअली डिटैचमेंट इज नॉट पॉसिबल। हम लोग संत नहीं है, बस एक्सेप्टेंस इज द ओनली फैक्टर। प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर कोई लोग बोलते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मेरे बारे में ही ऐसा क्यों बोला है, तो वी आर नॉट एक्सेप्टिंग वो दैट थिंग कि ये मेरे बारे में क्यों हो रहा है। वहां पे कुछ एक ईगो जो फैक्टर रहता है, तो वो दिक्कतें देता है कि वो हमें उस चीज को बार बार सोचने पे मजबूर करता है। उसने बोल दिया है, वो बात खत्म हो चुकी है, 2 घंटे पहले खत्म हो चुकी है। वी हैव टू मूव ऑन बिकॉज देयर आर मेनी थिंग्स टू डू इन द लाइफ। तो जब जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस चीज को, हम आगे मूव ऑन ही नहीं हो पाएंगे। और आप जो चीज नहीं बदल सकते, आपको एक्सेप्ट करने के अलावा दूसरा ऑप्शन ही नहीं मैम। Yeah, very true. Yeah, exactly. अमेजिंग यार, एब्सोल्युटली अमेजिंग। जिस जिस हमको लेवल की डिस्कशन हम कर रहे हैं, इतना इतना वी आर सपोर्टिंग ईच अदर। हम एक दूसरे की क्वेश्चंस को आंसर कर रहे हैं, अपनी पर्सपेक्टिव शेयर कर रहे हैं, एंड सो मेनी डिफरेंट थिंग्स वी हैव टॉक्ड अबाउट। ऑब्वियसली ऑल आर कनेक्टेड टुवर्ड्स आवर वेल-बीइंग, बट I think the common topic of today is कि how do we stay away from negativity and negative people, negative conversations, and सबने अपने अपने तरीके बताए हैं। किसी ने बोला पेट के पास रहो, किसी ने बोला एक अपना टाइम पीसफुल टाइम रखो, किसी ने बोला एफर्मेशंस करो, किसी ने बोला एक्सेप्टेंस करो, किसी ने बोला अलग पर्सपेक्टिव से चीज़ों को बोलो, चीज़ों को देखो। रोहन जी ने कहा कि अभी अभी लास्ट आपने क्या कहा एक्सेप्टेंस के अलावा? व्हाट एल्स डिड यू से? दैट वाज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्ड। सर मैंने बोला कि रिस्पॉन्स पे हमें जाना चाहिए इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग विद द सिचुएशंस। राइट, मतलब हम सॉल्यूशंस ओरिएंटेड बात करेंगे इंस्टेड ऑफ जनरल टॉपिक। solution oriented thinking, solution oriented talking, giving a space। हम क्या करते हैं कि हम ट्रिगर हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, तो हम रिएक्ट कर देते हैं। तो रिस्पॉन्ड करना, रिएक्ट नहीं करना। I am really amazed by the kind of discussion we have had today. Again, I will share some messages from the chat. Actually, if you are not in a good state of mind, then you have to break. मतलब आपको 5-10 मिनट का ब्रेक ले सकते हो, क्योंकि दिमाग नहीं चल रहा होता है। एंड उसके बाद में आप जो रिएक्ट करते हो वो उतना बुरा नहीं होता है जितना इंस्टेंट रिएक्शन में हो सकता है। यस, इवन मैम साइकोलॉजिकली और एक बात है कि अगर आपको बहुत निगेटिविटी फील हो रही है तो पानी पियो। द वाटर इनटेक आपका निगेटिविटी बहुत हद तक कम करता है, आपको स्टेबल बनाता है। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। इवन सामने वाला इनटॉक्सिक पीपल आपसे बात कर रहा है ना, तो आप उसको पानी ऑफर कर दो, उसका भी टॉक्सिक लेवल बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर झगड़ा हो रहा है दो लोगों में, तो जस्ट गिव हिम अ वाटर कि यार थोड़ा पानी पियो आप, फिर बात करो,
तो इंटेंसिटी बहुत हद तक कम हो जाती है बिकॉज ऑफ यूजिंग द वाटर इंटेक। इफ अगर याद है तो जो स्ट्रेस लेवल कम करने वाला जब कॉन्वर्सेशन चल रहा था, आई मेंशन द सेम पॉइंट कि थोड़ा पानी लो एंड आराम से पियो उसको, नॉट लाइक मैम पूरा पी लिया वैसे। ऑनेस्टली मैम मैं फर्स्ट डे आया हूँ, दैट इज गुड वन, बट मैं फर्स्ट डे आया हूँ, मुझे नहीं एक्चुअली पता। नो नो ये नो, आई एम मैंने नॉट। मैम पसंद है मैम, मैंने एक्सपीरियंस किया था मतलब ओके रोहन जी, यस ही इज बैक। एक्चुअली ये मैंने एक्सपीरियंस किया था एक इंसिडेंस में, सामने वाला बहुत ज्यादा गुस्से में था, सो आई जस्ट हिम कह रहे यार थोड़ा तो शांत बैठ, थोड़ा पानी पी ले ठंडा, देन वी विल हैव अ डिस्कशन। तो पानी पीने के बाद उस आदमी का जो कुछ भी गुस्सा था वो अप टू 70% डिक्लाइन हो चुका था। तब मैं बोला प्रॉब्लम क्या है, तो उस प्रॉब्लम पे पहले आ जा। तो वो जाते वक्त इतना रिलैक्स गया कि अरे यार अच्छा हो गया आपके यहाँ पे आ गया, तो मेरा थोड़ा गुस्सा, मेरा बाकी का गुस्सा आप पे निकल रहा था। तो मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस कि सामने वाला इनटॉक्सिक होता है बिकॉज वो कहीं से गुस्सा लेके अपने आप मतलब हमारे यहाँ पे आके निकलता है। तो वो भी हैपेंस, मतलब वो भी चीजें होती है कभी कभी। आई एम सॉरी आई एम सेइंग दैट, बट अगर कुछ ज्यादा ही कुछ हो रहा है ना, आपके ऊपर भी आ सकता है वो पानी, वो थोड़ा ज्यादा हो सकता है। हमेशा ऐसा नहीं हो सकता नहीं कि वो देखो पानी मैम, पिएगा। हाँ नहीं जस्ट किडिंग, नहीं वो डोंट तो टेक है इट मैम, पर्सनली। बट वी हैव टू ट्राई, वी हैव टू ट्राई। मतलब देखो घर में तो हम कर सकते हैं, बाहर मैं नहीं बोलूंगा, प्रोफेशनल लेवल पे नॉट पॉसिबल। बट अगर मोस्टली घर में जब डिबेट होते हैं और फैमिलीज में इश्यूज होते हैं, तो वी कैन ऑफर दिस थिंग एंड सामने वाला उतना तो कंसर्न करेगा कि ठीक है पानी पीता हूँ एंड देन वी विल वो हैव अ टॉक। पानी तो एटलीस्ट डालेंगे तो फैमिली हम इश्यूज में भी वो चीजें डाल भी देंगे कम हो पानी। जाती है। सॉरी मैम। All right, so I will again good inputs, रोहन जी। मैं तो चार्ट पे लिखने लग गया हूँ बिकॉज आप इतने सारे चीजें कह रहे हो। तो आई थिंक हम सबको ये रिकॉर्डिंग फिर से सुननी चाहिए। हमारा डिस्कशन हियर देयर हुआ है, बट पॉइंट्स बहुत अच्छे हुए, बिकॉज एवरीबडी हैज सो मेनी थिंग्स टू शेयर। एंड आई रियली लाइक दैट एवरीबडी इज बीइंग पॉजिटिव अबाउट इट। ऐसा नहीं है कि ये तो ऐसा है, ये तो ऐसे है। इट्स बीन वेरी कंस्ट्रक्टिव। I'll read some more messages from the chat. Siana says to Niharika, we should be understanding but need to balance. We shouldn't allow people to take advantage of us. We need to seek solutions for our inner peace. Okay, so focusing on our inner peace. And Siana also says, agree with Rohan, it is important to move on. Kamal says people are not negative, situation makes them feel like that. Varnika agrees to that. True, there are no negative people, just their conditioning, the environment they have grown up in. And most of the negative mindset or behavior comes from fear. Again, you touched on a very important topic. ये जो fear है जिसके basis पे anger होती है या judgment होता है, it's coming from a deeper space. Sudhaji says, nice suggestion. I take deep breaths. Response to Rohanji. Neharika says, nice, so many suggestions, good inputs. All right, so time to conclude our discussion. We usually have 30 minutes for EST sessions, but जब हम discuss करने लग जाते तो इतना discussion होता है हमारे पास. I want to acknowledge a couple of people here. So I want to acknowledge Sandhya, who has been very positive today, and it was a pleasant surprise for me because oftentimes she is the one asking questions or raising doubts कि ये हो पाएगा क्या, ये मुश्किल होता है. But today she was the one who was answering other people's questions. So very nice to see you taking on this role, Sandhya. Good to see your positivity. Then I I'm want to... negative about only 5 a.m. waking up. मतलब 5 बजे उठना is not possible for me. Otherwise, I'm a very positive person. नहीं, आप मत उठो 5 AM, आप 2:30 PM को रोज आओ, शार्प 2:30 को PM को आना. Okay. Sure. Neharika was the one who was asking questions today, raising her personal concerns. It's very important to ask questions because questions हम सबके पास होते हैं, हम सबकी issues होती है, challenges होती है, and unless we ask questions कि ये कैसे होता है, कि ये situation में हमको कैसे करना है, we won't be able to grow, right?
So there is some awkwardness in asking questions, but I'm very glad Niharika asked those questions because people were able to help, people were able to give inputs. I want to thank actually everyone, बहुत सारे लोगों ने participate किया, but Rohan for giving many insights, Sonal for starting the discussion, agreeing with people, Harshada for giving many inputs, Kamal for responding on the chat, Varnika for asking questions and also responding on the chat, Sudhaji for sharing a lot of insights, and Sienna, did I mention you? Also for your inputs. Very, very nice discussion today. I would suggest everybody to listen to the recording again. आपको खुद को नए inputs मिलेंगे and you can share it with any friend and let's make this a practice. By the way, how did you find today's discussion? Did you find it helpful? Please put on the chat. Did you get to learn something new? Very nice, Sudhaji says. Yes, Rohanji says. Sonal says, yes, water wala. Okay, interesting. All right. I want to add something. Yes. Actually, according to me, आप खुद डिसाइड कर सकते हो आप अपने आप को कैसे खुश रख सकते हो. कोई बोल सकता है कि ये हुआ है कि पेशेंट मूव ऑन करो ये वो, बट ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने आप को खुश कैसे रख सकते हो. चीजें सबको अफेक्ट करती है, चीजें सबके साथ होती है. मैंने एक बुक पढ़ी थी लाइफ सॉरी संध्या, मैं कहता मैंने एक बुक पढ़ी थी लास्ट मंथ, लाइफ अमेजिंग सीक्रेट बाय गौर गोपाल दास. उन्होंने एक डायग्राम था उसमें बड़ा अच्छा, उनसे बुक के बैक पेज पे भी है वो, कि देयर इज अ प्रॉब्लम, कैन यू डू समथिंग फॉर दैट, यस देन व्हाई वरी, आई रीड नो नो देन व्हाई वरी. जब कुछ कर सकते हो तो कर दो उसके सॉल्यूशन, जब नहीं कर सकते फिर क्यों परेशान हो रहे हो. तो मतलब जो टेंशन है, जो वरी हम खुद ही क्रिएट कर लेते हैं. इफ देयर इज सॉल्यूशन फॉर सम प्रॉब्लम जस्ट डू इट. अगर उसको नहीं कर सकते देन एक्सेप्ट एंड मूव इट. आई नो एक्सेप्टेंस इज टफ, but once you start accepting that thing which you are not able to control, then you feel light and relaxed. सर कमल जी, एक्सेप्टेंस बहुत बड़ी ताकत है. अगर आप फैमिली मेंबर्स को एज इट इज एक्सेप्ट करते हो तो 80% क्वारल्स वहीं पे खत्म हो जाएंगे. क्योंकि प्रॉब्लम होता है कि वी नेवर एक्सेप्ट द फैमिली मेंबर्स द वे दे आर. हम जज करने लगते हैं उनको. राइट. तो उन्होंने जब कुछ कह रहे थे शायद. Best yoga and meditation. Okay, so I think हम सबके पास बहुत कुछ है शेयर करने को, and I would invite everybody to come back next Friday for another discussion. I'm sure everybody, मुझे आपको सवाल भी नहीं पूछना है. I'm sure everybody wants to take part and speak again and listen to others again. What I want to ask from you on the chat is हम क्या थीम रखें. जैसे आज का थीम बन गया कि टॉक्सिक पीपल एंड नेगेटिविटी एंड थिंग्स लाइक दैट, negative conversations. What is one topic that you would like to touch upon the next time? Just put it on the chat. We will be prepared and we will discuss about that. And thank you all for the comments on the chat. Somebody said very useful, definitely relaxing, felt very positive, much needed as always. Okay. Neharika says, is it okay to skip a meal when you're upset? Self-talk, handling conflicts. I need to note these down. Series to watch that can make a positive impact on our mood, like Friends, getting rid of self-comparison with others. Okay. Anything else? I'll just give a few more seconds. I'll make a note of these and then we will do like one topic every week. Okay. Okay, so we will end the session now. Thank you all so much. Let us all give a clap for ourselves. We did amazing. And let's put a heart for ourselves. आपको अगर emoji function use करने आता है तो वो जो हमारी सेल्फी हो गई आज की. सेल्फी हो गई आज की. Yes. Okay. We do a selfie before we start the discussion. वर्णिका के लिए एक और सेल्फी करना है क्या? चलो, let's do it. So yes, exactly, heart.
We'll do the heart. Please turn on your camera for 5 seconds. We do a different selfie. आज हम EST group में 2 selfie post करेंगे. Okay. Ready, everyone? I'm starting the timer. Payal, nice to see you. Okay, starting it now. 5, 4, 3, 2. Oh, wait. Sienna was not ready. Okay. 4, 3, 2. Jaldi. Okay, just in time. Thank you so much. Thank you all. Lovely discussion. Have a great weekend, everyone. Do join our sessions and see you for more discussions every day on the weekdays at EST session, 2:30 p.m. IST. Bye, everyone. Thank you. Thank you so much. Bye-bye. Thank you.